और सैटरडे स्पेशल के लिए सबका स्वागत है। जनरल नारायण के साथ आज थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट हमने लिया है, चाइना में क्या हो रहा है। देखिए चाइना, ये डेफ टॉक्स का चाइना बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमारी एनालिसिस ज्यादातर चाइना की होती है, ऑल्दो कल रात को काफी अच्छा प्रोग्राम था पाकिस्तान के लिए, बट चाइना के ऊपर हमारी नजर थोड़ी होनी चाहिए। तो शी जिनपिंग जो आज राजा है चाइना की, द एम्परर ऑफ चाइना जिनको मैं बोलता हूँ, बाय द वे द एम्परर ऑफ चाइना इज बैंड टू बी सर्च्ड ऑन चाइनीज सोशल मीडिया, वो अलग चीज है, बट द एम्परर ऑफ चाइना इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। बोलते हैं ना, थोड़ा पीछे से उसको झटका मारा जा रहा है। एंड हु बेटर टू टॉक अबाउट दैट देन जनरल नारायण सर। सर पहले तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू द शो। जय भारती आदि, lovely to be back again after a week. And yes, चाइना के ऊपर नजर होनी चाहिए क्योंकि हमारा प्राइम एनिमी नंबर 1 तो चाइना है। बाकी मतलब करते रहे जो करना है उनको, सानू की they will sort themselves out themselves. अब देखिए Like the इमरान खान Pakis are doing, like the Pakis are doing for themselves. मैं वही बोल रहा था। But China, we have to be very careful of the dragon. तो सर पहले आई नो यू, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें तो घुसेंगे, बट थोड़ा सा बेसलाइन बना लेते हैं सर। हमारा जो आज हमारा सब्जेक्ट है, हमने ये क्यों चूज करा है, सबसे पहली ये चीज है। हमारे एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, आई थिंक वेडनेसडे थर्सडे को हम बात कर रहे थे, जब हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। बट एक एक चीज मेरे को पहले पूछनी है सर आपसे, सीसीपी का जो एक 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 जो इस्टेब्लिशमेंट है, देखिए चाइना में भी एक डीप स्टेट टाइप कुछ ना कुछ होगा जो दोनों तरफ से बात करता है। जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बोलते हैं ना सर, यूनि पार्टी है ये, मतलब दोनों बैठ के बीच में, अच्छा भाई ऐसे इस डायरेक्शन में लेके जाना है, उसके बाद प्रेसिडेंट जो मर्जी हो आगे चलता रहता है। तो चाइना का जो डीप स्टेट था सर, उसका शी जिनपिंग से क्या एक्सपेक्टेशन था सर? सबसे पहले उसमें उसमें जाते हैं, ये आया था कहां से? सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आप 5 मिनट थोड़ा सा ऑडियंस को एक बारी अपडेट करें, शी जिनपिंग का क्या रोल था। ये तो एकदम साइडी सा था, इतना कोई सुपर परफॉर्मर नहीं था, कुछ नहीं था। यानी अभी यानी जो ओपनिंग स्लाइड से जाने से पहले जो ओपनिंग रिमार्क्स देना है मेरे को कि भाई टॉपिक ये है, शी जिनपिंग के अगेंस्ट कौन है, और शी जिनपिंग के अगेंस्ट जो भी आया है वो सेल्फ क्रिएटेड। क्यों? वो सेल्फ क्रिएटेड इसलिए है क्योंकि शी जिनपिंग का राइज भी है, इट हैज नॉट बीन विदाउट ड्रामा। ठीक है, फर्स्ट टर्म लेते हैं, आई हैव ऑलवेज कॉल्ड हिम अ कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट। व्हाई? टंग शाओपिंग ने सिस्टम सेट किया था, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव लीडरशिप तो था ही था, सेट रूल बनाया था, एक दफा प्रिंसलिंग, अगली बारी यूथ लीग, नॉन प्रिंसलिंग बोलते हैं, जो यूथ लीग बनाया था नॉन प्रिंसलिंग। तो ये बारी बारी से करेंगे। जो अनॉइंटेड प्रिंसलिंग था, जिसने आना था, वो था बोजीलाई। जब बोजीलाई का नाम आया था, ये कहीं नहीं था, इसकी कोई स्टैंडिंग या रेपुटेशन थी ही नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। आज भी जो इसके नजदीक रहे हैं, चाहे फूजियान में रहे हैं, शांसी में रहे हैं, जेजियांग में रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये एवरेज से बिलो एवरेज मेंटालिटी का बंदा है, पर बहुत स्टबन और ऑब्स्टिनेट है अपने स्टैंड में, जो करना चाहता है और जो सोचता है वो करता है, दिमाग मगर नहीं है। बोजिलाई फेल क्योंकि चॉन्किंग में वो अपनी क्लीक बनाना शुरू किया। उस जमाने में 2010-11 की बात है,
तीन क्लिक होते थे या तीन फैक्शंस आप कह लो। एक तो टंग शाओपिंग का फैक्शन था, विच वाज एसेंशियली कंसिडर्ड एज द बीजिंग रेवोल्यूशनरीज, फैक्शन। हाँ, बीजिंग बट फैक्शन रेवोल्यूशनरीज वो बड़े रेवोल्यूशनरी। लोग थे। हाँ, दूसरा था जियांग जेमिन का फैक्शन। Jiang Zemin also, by the way, was a compromise candidate who came up after the Tiananmen revolution. जो स्टैंड ऑफ हुआ था थियाननमेन स्क्वायर में 89 में, ये कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट करके आया था। एंड द थर्ड वाज द कम्युनिस्ट यूथ लीग। तो Jiang Zemin and Tang Xiaoping were actually the princeling side, and youth league was the non-princeling side. अब जब ये टूट गया तो नाउ दे आर सर्चिंग कि बोझिलाई तो चला गया क्योंकि ये चौथी क्लिक बना रहा था, तो ही हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो ही गॉट सॉर्टेड आउट। उसमें जो चांगदू मिलिट्री रीजन का कमांडर था वो भी चला गया, वहां का जो पुलिस चीफ था, जो कि भागता भागता वहां के यूएस कॉन्सुलेट में ही हैड आस्क्ड फॉर अपना असाइलम, which the US refused and they informed। वहीं से पूरा पहाड़ फटा था। एंड his wife was arrested for the murder of a British chap, some A से नाम था, एलन एंड्रू समथिंग, बिजनेसमैन था। एंड ये भी मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट सॉर्ट आउट हो गया। नाउ दे वर इन सर्च ऑफ अ प्रिंसलिंग। So in the meantime, since a princeling was not there, Hu Jintao started pushing for Li Keqiang कि भाई कोई मिल नहीं रहा, आपके पास तो कोई है नहीं, तो ली केशांग तो तैयार बैठा हुआ है, उसको ले लो। And that is when the Scarborough Shoal incident took place. People who want to have a look at it, देख ले। The person in charge of the Scarborough Shoal incident to counter that was Xi Jinping. He went aggressive with Philippines, and the US pushed Philippines back and not them. And lo behold, suddenly a princeling came. And was it an orchestrated event to push a princeling forward? One doesn't know, can't put it across the Chinese to do such things. Orchestration of events, they are past masters. But anyway, rest is history. जब वो आ गया, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट से पर्जिश शुरू कर दी। जितने उसके ओपोनेंट्स थे, एक के बाद एक उनको एंटी करप्शन ड्राइव में अंदर कर दिया। बट during this period is when he launched his BRI. China was rising, South China Sea के अंदर उसने artificial islands बना दिए। So amongst the hardliners, his stock went up कि बंदा यही है। Now comes the second term when he started actually flexing his muscles. क्या क्या किया? जो उसका nominated कम्युनिस्ट यूथ लीग से सक्सेसर था, सुन झेंकाई, पॉलिट ब्यूरो में होता था, who was to have been stepped up in the 19th Congress as the member of the Politburo Standing Committee. By the high, जो अगस्त में इनका मीटिंग होता है विद दी, अभी चल रहा है इनका, वीक लॉन्ग मीटिंग बेदाहे में होता है, बोहाई सी रिसोर्ट में, विद द पार्टी पर टेस्ला को बैन कर रखा है बाय द वे। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि सारा बातचीत निकल आएगा ना स्टारलिंक अगर मिलेगा तो। सो उसके पहले ही वाज अरेस्टेड एंड हिज ओन फर्स्ट जॉइंट स्टाफ कमांडर जो बनाया था इन्होंने, जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट अलग से, उसका फर्स्ट था, क्या नाम था उसका, फांगफेंगा, उसको भी अरेस्ट कर दिया। पहले बोला करप्शन, उसके बाद एंटी नेशनल एक्टिविटी, चार्जेस चेंज करते गए, पर्ज हो गया वो। एंड सिंस BRI was doing well and his stock was on the rise, 2017 में he had called for a meeting and almost that was when actually people started painting him as Emperor Xi, where world के सारे big figures had come there. He broke the tradition and did not consult the party elders thereafter at all in the Baidahe meeting, 2018. And that is when he removed the term limits,
and totally by then slowly करके उसके बाद in his second term he's totally destroyed the collective decision making. All the important leading small groups जितने थे उसके ऊपर चढ़ के ये बैठ गए. Even Li Keqiang, who was supposed to be the head of economy, उसने काट के निकाल दिया. ये इसका रेपुटेशन है. एंड दोनों टर्म में he went aggressive against Taiwan and against India. Like you find he became aggressive to 2013 onwards. He was aggressive in Eastern Ladakh. Then you had Doklam, and then of course Galwan. Nobody can forget it. Taiwan के अगेंस्ट कितना एग्रेसिव हो गया वो वहां पे. एंड नाउ कम्स द स्ट्राइक बैक कि कोविड का पैंडेमिक हो गया, ट्रेस टू चाइना. एंड टू cover up for it, he started under Wang Yi the wolf warriorism. Zabardast. To go aggressive. Zero COVID. पूरा एक जगह कोविड होता है, पूरा शहर का शहर को सील कर दिया और सारे जितने मरे क्या हुआ सब डिटेल्स दबा दिए. Millions have died actually and he is covered up for it. इकोनॉमी तो खैर इस धीरे धीरे डिक्लाइन तो हो ही रहा था. नाउ बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड और आफ्टर ऑल चाइना का तो was till then and has always been a export driven economy. So the moment you shut down everything, there is nothing. So the economy collapses. So you had a collapsing economy. Then you started pushing against the private players. कि सब मेरे नीचे आना चाहिए. Look at how he handled Jack Ma and others. His own handling of COVID became stark. कि 3 साल से बंद पड़े हैं लोग, निकलने नहीं दे रहे. वो पता नहीं कितने. It's not necessary that when I say millions have died, it is not necessary millions died of COVID. Millions died for lack of medical cover, क्योंकि जो दूसरे एलिमेंट्स थे वो भी बाहर नहीं निकल सकते और मेडिकल एड नहीं मिलेगा तो मर गए. क्लासिक एग्जांपल वाज द फायर. फाइनल straw on the camel's back was the fire in Urumqi. Because of lockdowns everywhere, your fire brigade couldn't reach there. Because everywhere locks लगा के बैठे थे. Your fire brigade couldn't reach in time and people died. साथ ही साथ comes the steady rise of India towards the end of his second. And Galwan was a fiasco for him and he tried again before the 2022 third term के पहले an incident at Yangtze which again backfired. Now comes his third term, unprecedented, but I call it the crumbling facade. उसका फसाड टूट रहा. क्यों? Economy devastated. Stagflation, I would say, is already in recession. Cover up करके चोरी करके बोल रहा है. I was reading a report and लेई का भी टॉक किया था where she also spoke on the same thing कि ये इलेक्ट्रिक कार्स का कर क्या रहे हैं. You know what has happened is they are giving them a lot of subsidies. Yeah. तो बहुत सारे कार मेकर्स आ गए, सब्सिडी लेते हैं, कार बनाते हैं, डीलर के पास जाता है, बिटवीन द डीलर एंड द मेकर दे हैव अ डील. सारा कुछ स्ट्रिप करके वापस, एक्सक्लूडिंग द बॉडी, सारा स्ट्रिप करके वापस डीलर के पास आ जाते हो, पुट इट इनटू द नेक्स्ट कार. As a result, the cost of making the car went down, but the subsidy they were getting was more than what was the cost of the car. और लूट लिया इन्होंने ट्रेजरी. और ये चल रहा है बाय द वे एज पर रिपोर्ट फ्रॉम अराउंड 2015-16 से चल रहा है लूट. एज अ रिजल्ट टुडे most have left the field because they have stopped the subsidy. Last year they stopped the subsidy. कार बनाने बंद कर दिए, कार मेकर सब चले गए.
Now what is happening is their biggest car makers. By the way, BYD is not looked upon as a big car maker in China. They have the other names I am forgetting, Zila, Ali, Alia, ऐसे कुछ नाम है, 3 नाम है. They are incurring losses and they are not able to compete with Tesla, and Tesla is wanting to shift to India and they don't know what is their way ahead. ये situation है जो बोलते हैं कि China is the lead in electric car making. E-cars This and all is that. the status of their electric cars. Okay, food insecurity complete हो चुका है. And the environment damage that they have done over so many years, starting from Deng Xiaoping's period and now doing everything, is coming home. All the chickens are coming home to roost. कभी floods होते हैं, कभी drought होता है, कहीं floods हो रहा है तो दूसरी जगह drought हो रहा है, and they have no answers for it. अभी भी सारे आसपास जो arable land है उसके पास जो पहाड़ है, they have torn down all the trees and made terraced farming के लिए, राइस डालने के लिए. और अभी तो torrential rains आ गया thanks to that typhoon Doksuri. अभी पता नहीं क्या बचा होगा. Okay, and it is the whole problems are coming home to roost because of his megalomania to be considered as the tallest ruler ever to have ruled China. China was rising. Not that they were not doing all these things and wanting to rise before. They were. But they were taking a careful and guarded approach to their whatever they were doing. जब से ये आया है इसने सारा तोड़ के जल्दबाजी में हुआ है. अंग्रेजी में कहावत है, हेस्ट मेक्स वेस्ट. ठीक है, और हेस्ट था इसलिए बीआरआई में इतना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर दिया है कि अभी कुड़की हो रही है इनके खुद की. पैसे नहीं बचे और ना पैसे वापस आ रहे हैं. जिन जिन देशों में दिया उनकी कुड़की हो गई है. तो कहां से लाओगे? Wasteful. See, it's good to create infrastructure, but the infrastructure must contribute to your economic development. ना infrastructure बनाने से क्या फायदा है? 2008 से ये बना रहे हैं ghost cities of China, roads leading nowhere. Everybody talks of their bullet trains. इतने bullet train बना दिए, इतने bullet train बना दिए. That's a white elephant. People should read the reports about their खाली खाली जाते हैं. हम भी ट्रैवल किए हैं बिटवीन चांगदू एंड बीजिंग. हमारे कोच में तो हम 8 बंदे थे. 8 which could seat 72. We were 8. How do you make money like that? That's a loss-making venture. Yes. अभी इस बार में क्या किया? So when Sun Zhenkai was sidelined, CIOL thought कि उनका नेक्स्ट जो बंदा था, who was part of the Politburo, हुन चुनवा को बना देंगे. प्रिंसलिंग्स वगैरह सोच रहे थे कि जो इसका हैंडपिक बंदा था चेन मिनेर, उसको बना देंगे. इसमें क्या किया उसने? हुन चुनवा तो सेंट्रल कमेटी में भी नहीं है. चेन मिनेर भी साइडलाइन हो गया. तो जो 6th जनरेशन आना था उनको तो पूरा साइडलाइन कर दिया इसने. He just sorted them out. And we all know how he insulted his superior, Hu Jintao, publicly. अब जो भी कहानी बना दो वो तो इंसल्ट है. You don't pick him out like this. Basic respect culturally, even in China, where they, that's why I keep a difference between PRC and China. PRC is not China. It's the Communist Party. The Chinese culture respects their elders. One would have expected Xi Jinping to have helped some way to escort him out, and then the others escort him out. उसने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा. When he came to talk to him, he didn't even turn to talk to him. हाँ, उसको थोड़ा, yeah, that is correct. हाँ जी, वो तो पूरा evident है. Okay. And to say now that he was not feeling well, everybody can see that he was trying to open a file when he was suddenly caught up and removed.
And now, in this period, he is feeling cornered, because we will talk about what all are the challenges that he has created for himself. And when you are cornered like a rat, you can hit out anywhere. So Bharat has to be careful. You have to be on guard, because he thinks like Mao. And Mao, when he was cornered in 62, hit out against us. We were with our guard down, so we paid the penalty. So this time, and after that, we have never been with our guard down. And so we cannot be with our guard down against this man. Correct, sir. Same is the case, I'm sure, with people in South China Sea and Taiwan. Where he hits out, we don't know. इसमें एक ओवरऑल स्कीम में एक मेरा थ्रेड है. I feel the rise of China was orchestrated by the global deep state. पैसे बनाने के लिए. At no time till date has China ever abided by any of the international norms and rules for it to get a seat in the high table like the Security Council or joining the WTO. So it would have come in because these people would have felt that they can make a killing in China. And they have made a killing. I have no two doubts about it. They have made a killing in China. Even Soros, for that matter, now that you say that, sir, sorry to interrupt you. There is a legal battle going on between the Justice Department and the Ministry of Finance of the Treasury Department and George Soros as well as BlackRock. Now that you mentioned this, about investments in China. Yes. Now that investments are coming out. Why? Because end of second term and now in this third term, he went with these full guns blazing against private players. Ji. Wanting complete state control, wanting them to share their technology, wanting that offices of the Communist Party has to be opened who will oversee the workers. Now, जो पैसा बनाना चाहता है वो तो निकलेगा. Now you can link it to why BlackRock and others are opening offices in India. So it appears that the deep state is now ready to dump him. And that is where I had my question when we will discuss how will the Communist Party react to this problem that they are facing. Because all this is Xi Jinping ka orchestrated. Just imagine if he had, chalo BRI bhi bolta, he should not have gone so fast. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. थोड़ा जल्दी करता वो बात अलग है, थोड़ा जल्दी कर देता तो उतना ज्यादा भी नहीं. By now he would have also been a very respected figure in the Communist Party hierarchy. As it is, his thought is already there in the constitution. The biggest blunder he did was to put BRI in the constitution. So the moment you put something in the constitution, then all the other countries start worrying about that, because anything which is in your constitution is meant for your economic growth. And he has stated that BRI is meant as the economic engine for the growth of China. If BRI is the economic engine for growth of China, then how can it be a win-win situation for any other country? It cannot be. But be that as it may, जब उसका thought, इसका ये सारा कुछ enshrine हो गया, he should have walked out. He didn't. And now I think CPC is facing the brunt. So can we take the slide? Absolutely. I'm sorry, my reaction was a little weird. जब भी कोई Xi Jinping thought बोलता है ना, मेरे को बस एक ही ये reaction होता है. You know, like seriously,
यार 1.4 बिलियन लोग हैं तुम भाई, वो पढ़ लो क्या बोल रहा है। आई मीन एंड आई एम एक्चुअली रीडिंग दैट, यू वंडर यार ये क्या किसी चाइनीज चैट जीपीटी को बोला है क्या लिखने के लिए? ऐसी कुछ लगता है सर, वो ऐसी फ्लारी लैंग्वेज है उसके अंदर कि भाई पता नहीं कहाँ से उतरे हम, कहाँ से तुम उतरे, बाकी सब गड्ढे में है, चाइना एक पहाड़ के ऊपर है। बिल्कुल। So let us go to the next, that is she losing power in China? Now, like I said, it was his megalomaniac obsession to be the greatest leader. But his biggest problem along with that kya aata hai? He sees enemies everywhere, even with people whom he has mentored. Latest purges सारे इसके मेंटर्ड किए हुए हैं, जैसे रॉकेट फोर्स। जी See, the two main entities which for any war that he needs, who will be acting first, even like support force will act even before the war, strategic support force, and before the war formally opens is the rocket force ka task. He has purged firstly 6 purges in the rocket force. कौन है? Well, पहले पुराना कमांडर एंड एक्स डिफेंस मिनिस्टर वाइफेंगा अंदर जेल में, उसका जो कमांडर है लियू चाओ जेल में, उसका एक्स डिप्टी कमांडर हु वाज चीफ ऑफ स्टाफ इन द जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ द सीएमसी ली जांगजोंग जेल में, जो डिप्टी कमांडर था लियू गुआंगबिन जेल में, ठीक है, जो प्रीवियस पॉलिटिकल कॉमिसार था जू जोंगबो जेल में, और प्रीवियस डेप्टी कमांडर वो हुआ whose son has been linked for that leaked paper, वो भी जेल में। 6 जन उनकी जिंदगी सेकेंड आर्टिलरी और रॉकेट फोर्स में निकली है, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टिल कमिंग टू द टॉप, एंड दे आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। लेके किसको आया? बाहर से लेके आया एक जो जिसकी पूरी जिंदगी नेवल में गई है। Who was he? He is the deputy commander of the PLA Navy. उसको प्रमोट करके डाल दिया तुमने कि भाई यू आर द हेड ऑफ द रॉकेट फोर्स। वांग हाउ बिन कुछ नहीं जानता रॉकेटरी के बारे में, उसके ऊपर बैठाया उससे भी सीनियर बंदा जो साउथ थिएटर कमांड के एयरफोर्स का पॉलिटिकल कमिश्नर है, जू जीजेंग, उसको लाके खड़ा कर दिया उसके ऊपर कि तू गार्ड करके देखेगा कि ये सही चलता है कि नहीं। इट इज लाइक सेइंग कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी अनहैप्पी विद द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो उसको निकाल के एक चीफ ऑफ पुराने जो डेप्टी चीफ ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया। क्या प्लान बनाएगा यार वो? टॉप हायरार्की, इन्हें 2 तो चलो बाहर थे, टॉप 4 तुमने निकाल दिए हैं। हाउ इज दिस गोइंग टू फंक्शन? इसके अलावा 2 स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स से आपने निकाल दिए, कमांडर एंड डेप्टी कमांडर बोथ। डेप्टी कमांडर शांग होंग तो पिछले साल अक्टूबर से गायब है, नजर नहीं आ रहा है, और कमांडर जू गांगशेंग बोथ आउट। और इन दोनों की जिंदगी वो सिग्नल्स के नंबर 3 डिपार्टमेंट, नंबर 4 डिपार्टमेंट इनके वो चलते थे जहां पे सारा काम होता था ये सब का पहले, इनकी जिंदगी इसी चीज में निकली है, right? And these were hand-picked people of Xi Jinping, which is what I'm saying, he sees enemies everywhere. किनजांग, who can forget? चिनगांग का तो गायब ही हो गया उसका फॉरेन मिनिस्टर। वांग यी, who is separate, यानी who had been promoted up in the state council as the head of the foreign affairs committee, उसको डाउनग्रेड करके बोल रहे हो आप फॉरेन मिनिस्ट्री भी देखो। तो इज इट, यानी हालांकि ही वांट्स ओनली लॉयलिस्ट अराउंड हिम,
which he has been working on for quite some time, and today सारे इसी के बंदे हैं, brings in mediocrity. But it means that उनको भी trust नहीं कर रहे हो आप. Is there some sort of a guilt conscience under you? You have some psychological disorder तो था, because of the purges. We have spoken about it when his father got purged. छोटा था ये. But इतना, the only other person in history that I've read of who was so megalomania जिसमें था, and who was seeing enemies everywhere, was Alexander. वो कितना बोल दे Alexander the Great, घंटा ग्रेट था, कोई ग्रेट वेट नहीं था. If he felt threatened by his closest friend, he would kill him with the whatever weapon he had in hand. And if somebody fought against him, he would slaughter that whole city. And then you expect me to believe कि पोरस को छोड़ दिया, घंटा पोरस ने छोड़ा होगा उसको. That was our chivalry, which is part of our chivalry. All through his life, he shows no chivalry, and suddenly you say पोरस को छोड़ दिया because he said that treat me like a king. He would have if he had won, he would have slaughtered everybody there. Correct. And if this, as they claim, he had won and the people were tired, then he'd have gone back over the territories that he had won, so that his men rest. Why did he go over unconquered territory again and then try to win? Because he was such a megalomaniac, and the first crushing defeat that he suffered, that he had to run with his tail down the Indus and then go towards Egypt and run away. All the other people who were there, his leaders who were there in Afghanistan and all the other places, revolted and created their own kingdoms. The entire system broke down. Yes, sir. Yeah. Okay. We are digressing. Now, the people have slowly started gaining voice. We cannot forget what all has happened till now, just before his reselection, I would say, not re-election. Where he selected himself. There are revolting, and there are reports of revolting everywhere. And his biggest worry would be that historically the mandate from heaven has been lost whenever there have been sorrows. Sorrows matlab the natural calamities. They were very dependent. Agricultural society hai. Yes, Yangtze tha, but the biggest agricultural land was available, which is available, is along the Yellow River. And the Yellow River is not tameable. It would have floods, it would have drought, so if it would change directions. In one of your shows, I have given the map of various change in directions and the resulting fall of the various empires. Song, Tang, sab gire hain. Because somebody else has fought with them, drought वगैरह हो जाता है. And now there are a series of droughts, floods and droughts which are taking place in China. अभी recently तो Beijing में floods है. What did he do? They diverted the water, and there are some villages which have totally washed out. यार कितने बंदे मरे पता नहीं. वो तो पिछली बारी भी किया था ना, सिटी को बचाने के लिए वो छोटे-छोटे villages और इन लोगों को वो sacrifice कर देते हैं. So apart from this, you have COVID. It has still not died down. Food totally insecure हो गया, कुछ उगता नहीं है. Thanks to your floods and drought, insecurity तो और बढ़ेगा. तो is he feeling so insecure that he feels that his crown is slipping, and that he has to purge PLA and keep purging PLA to see that they don't revolt? Because after all, the PLA भी आदमी से जुदा नहीं है ना, लोकल से जुदा नहीं है यार. वो तो वहीं से आते हैं, उनके एक्सटेंडेड फैमिली रहते हैं. How will they relate to problems which their people are facing here? Correct. Then economy to, of course, like I said, is actually it's in a disaster today, and there is no solution in sight. सौ चूहे खा बिल्ली हज को चली. After suddenly making all these things, so first time the state council pushed back and said no, we will give level playing field to the private also, and they've started raiding for the CCDI को बोल के they've started raiding the SOEs also. और दूसरी जगह इन्होंने स्टेट काउंसिल ने बोला है कि साहब अगर आपको कोई ज्यादा
ओवर एक्ट करता है आपके साथ, कोई बदतमीजी करता है या कोई बैड बिहेवियर होता है अथॉरिटीज की तरफ से, आप हमको आके बताइए, हम एक्शन लेंगे उनकी तरफ। हम एक्शन लेंगे। ओके, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन ना। पैसे है नहीं आपके पास, क्योंकि या आई हैव लॉस्ट यू। आई थिंक ओके गाइस, आई थिंक सर का मेरे ख्याल से लाइट और समथिंग इज गॉन। हाँ, सर इज बैक। तो मैं सर या ये बोल रहा था, ये तो सर हाँ, एकदम ये तो ओपन रिवोल्ट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा, जो पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं सर। शी जिनपिंग जो ली केशांग के साथ करता था, जो पीपल्स डेली में लीकोनॉमिक्स को थोड़ा सा टारगेट करके आर्टिकल्स आते थे, ये होता था वो होता था, आप इस इन चीजों को लिंक करेंगे कि कोई ये अलग See, ही सेटअप है? वो बात ये था उस वक्त तो, जब टारगेट होता था, बिकॉज ली केशांग वाज द सेम वॉइस हु वाज टेलिंग हिम डोंट डू व्हाट यू आर डूइंग, अच्छा। यू आर पुशिंग चाइना टू द ब्रिंक। और वो कम्युनिस्ट यूथ लीग के साथ लिंक्ड है। अब कैसे कर सकता, सारे बंदे तो उसी के हैं। अब ली क्यांग हु इज द मोस्ट अन इकोनॉमिस्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिस्ट, उसको लाके बैठा दिया तुमने प्रीमियर पर। अब वो तो वही बुक कर रहे हैं। और अभी यू हैव गॉट द हेड ऑफ ऑल द की लीडिंग स्मॉल ग्रुप्स, आई थिंक 17 या 18 है, जिसमें से 13 की 14 का तो तुम ही बॉस हो, बाकी लल्लो चप्पो हैं, वो दे रखे हैं तुमने लोगों को। अब तुम्हारी पॉलिसी है, तुम किसको पकड़ोगे, किसके अगेंस्ट लिखोगे? यू कांट। एवरीथिंग इज, नाउ यू आर ट्राइंग टू से कि नहीं नहीं प्राइवेट प्लेयर्स को हम करेंगे। विच प्राइवेट प्लेयर विल हैव फेथ? बिकॉज नाउ दे आर सडनली फाइंडिंग प्राइवेट प्लेयर तो गार्ड, it's just a guard to prevent the FDI from going out. FDI आ नहीं रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, FDI आ नहीं रहा है। Why will they come in FDI and give you for your SOEs यार? FDI आ नहीं रहा है, FDI काफी इंडिया में आ रहा है और बाकी जगह जा रहे हैं। Then you say नहीं 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 नहीं, but कौन आएगा? But have you changed the policy of the Communist Party entities being part of these private players? No. And that there the political commissar will tell you what policy you got supposed to follow. How can you run a business like that here? You can't. Now, most important, is the PLA ready? I feel no, it is not. See, till 2015, when he made this drastic sudden change, Jiang Zemin, Hu Jintao, and even to a certain extent अपना टंग शॉपिंग, धीरे 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 करके चेंज कर रहे थे पीएलए को। आप सडन आते हो। इफ यू रीड Jiang Zemin's 3 टाइमलाइंस, 10, 20, 30 करके उसने टाइमलाइंस दिया था मॉडिफिकेशन के लिए, 2000 to 2010, 20, 30 करके धीरे 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 करके ये करना है। क्रॉस सेंचुरी, आई थिंक 90s ऐसे, फ्रॉम द प्रीवियस सेंचुरी टू दिस सेंचुरी कैरिंग ऑन करके लंबा दिया था क्रॉस सेंचुरी, द टाइमलाइंस ही हैड लेड डाउन 20 इयर्स का। इसने सारे चेंज कर दिए, धड़ाके से पूरा रिस्ट्रक्चर कर दिया। एंड द होल रिस्ट्रक्चरिंग वाज फॉर हिम टू हैव कंट्रोल, नो पैरेलल कंट्रोल। And then when you start changing organization structures, command and control का flow, and do it with a central autocratic control without pushing it down towards the decision making further down into the theaters, नहीं चलेगा। which is evident कि आपके पास अभी from 2020 to 2021 you have a fourth western theater commander। वहीं पे झड़प हुई है। पहला था वो रिटायर हुआ, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया, ही वांटेड एक्सटेंशन, ही थॉट ही विल गेट इनटू द पॉलिट ब्यूरो और समथिंग, उसको कहीं नहीं डाला। दूसरा लेके आया, उसको निकाल दिया। तीसरे को लाया, सडनली निकालते हैं, बोलते कैंसर है, हैंग, हेलो हेलो हेलो, मेडिकल का क्या हुआ, कैंसर। और फिर चौथे को भी लेके आया, चौथे को लेके आया, अभी पिटा गया है यांगसे से, अभी पता नहीं वो क्या करने वाला है उसका। पूरे रॉकेट फोर्स एंड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के टॉप ब्रास को आपने सैक कर दिया। द की स्ट्रेटेजिक एलिमेंट विद विच यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर
no war, no peace, and the first phase of the war, the strategic support force and your rocket force, you sorted them out. And from the start till now, almost about 150, starting from about 2015 when he started these purges, till date, close to 150 generals have been purged. When we say general, general comes with his personal staff and his handpicked staff officers whom he brings with them. All those would have also been targeted. सबको साफ किया होगा सर. Right? If all those have got targeted, what do you think is the morale of the damn PLA officer force? सर मैं तो उस दिन ये पूछा था, जनरल कौन बनना चाहेगा भाई? बोलेगा भाई सीनियर कर्नल, थैंक यू वेरी मच साहब, मेरे पेपर पकड़ो, मेरी मैं गोली, यू नो, आई ब्रेक माय लेग और समथिंग. वो तो अलग है ना, जब प्रमोशन के लिए आते हो. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द कंप्लीट डाउन द चैनल यार? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, क्योंकि जो बंदा फ्रंटलाइन पे खड़ा है वो सारा टाइम पीछे देखता रहेगा, यार मेरे को गोली पीछे से तो नहीं लगेगी कि भाई मेरा जो मेंटर है, इफ ही गोज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ शी जिनपिंग, मैं और मेरा खानदान तो गए. करेक्ट सर. I'm not surprised that they are failing. The reports that are coming out is they are failing in their conscript targets. Who will want to come in such an environment? चलो करप्शन था तो वो बोलेंगे यार पहले हम तो पैसे दे के कर लेते थे, आ जाते थे. आज तो वो भी नहीं है, पता ही नहीं, पैसे भी ले लेंगे और हमें राइट ऑफ भी कर देंगे. हेल्थ कोड डाउन कर देगा उसका. इनर चैलेंज इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मल्टीपल फ्रंट सेल्फ क्रिएटेड है इसके. किसी ने नहीं बोला इसको एग्रेसिव जाना है. जो इनका स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी था थ्रू आउट, इट वाज ऑलवेज सिंगल फ्रंट. वॉर जोन कैंपेन लोकल वॉर्स के लिए सिंगल फ्रंट. इट फेल्स इन मल्टीपल फ्रंट्स. व्हेन यू रीड देयर राइटिंग्स इट सेज अगर 2-3 लोकल कंट्रीज ऑल्सो रीजनल कंट्रीज आपस में अलायंस कर देंगे, इट फेल्स. सो यू विल ऑलवेज फाइंड ड्यूरिंग टंग शाओपिंग, जियांग ज़ेमिन, हू जिनटाओ के टाइम में भी अगर कोई ताइवान के तरफ कुछ हो रहा है, इंडिया की तरफ कुछ नहीं करते थे. अगर इंडिया की तरफ कुछ थोड़ी बहुत कुछ कर भी लेते थे, जैसे एक बार हुआ था सोमदुरांगचू में, तब ताइवान में कुछ नहीं कर रहे थे. इसने साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, साउथ चाइना सी, इंडिया, सबके तरफ फ्रंट खोल रखा है. लुक एट द इम्पैक्ट इंटरनली. जो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है, जो टंग शाओपिंग ने बोला है कि अब एक ही फ्रंट के साथ एक एक करके करो, डिप्लोमेटिकली वही कर रहे हो आप. बायलैटरल, नथिंग मल्टीलैटरल. ऑल डीलिंग्स आर बायलैटरल, 1-to-1. और यहां पे जब लड़ाई लड़ने आ गई तो आपने पहले तो आप बोल रहे थे हम इंडिया को मल्टीपल 2 फ्रंट देंगे, अपने लिए तो तुमने मल्टीपल फ्रंट खोल रखी है. हाउ डू यू मैनेज? तो उससे आइसोलेशन हो गया आपका, डिप्लोमेटिक वर्चुअली आइसोलेशन. तो अब हाथ पैर मार रहे हो, स्पेशली यूक्रेन भाग रहे हो कि मैं बात करूंगा वहां जाके. ठीक है. सो वहां जाते हो, उसके बाद आपका वहां जाते हो तो आपका बॉर्डर बंद हो जाता है पीछे से. या तो नाउ द होल इश्यू इज लाइक, इज द सीपीसी रीचिंग इट्स लिमिट विद जी? पुशबैक आया है, राइट. अच्छा, एक और पीएलए में था कि वो पहले प्लेटफॉर्म्स बना रहे थे धीरे धीरे, ताकि बंदे अवेलेबल हो, ट्रेंड बंदे उसको बंदों को ट्रेन करें. इसने आके इतने तेजी से किया है, द प्लेटफॉर्म्स आर आउटस्ट्रिपिंग availability not only of soldiers, even of trainers. How do you fight? Okay, now the problem that is he's finding, which is very you could say which is an eye opener. When you are very strong and you make sure and have full control over everybody, and everybody thinks that you are strong, there are no factions within that. Factionalism will be there but doesn't come out in the open.
Today, the factions have come out in the open. 7 with the 8th, which says no clear faction. 7 factions. There is a Zhejiang faction from where he was there, Li Qiang. आपने भी बात किया हुआ उसको, बट उसके साथ 2 ही बंदे हैं अभी, 3 बंदे हैं उस faction. जी. The bigger faction is the other place where he worked. He started his work, Fujian. Fujian faction, Kaichi and 5 more, 6 बंदे. Then इसके फैमिली का टाइस के साथ जो है शांजी फैक्शन. हाँ, इसका वाइफ का कुछ कनेक्शन है. ठीक है. Zaoleji and 3 people, 4 बंदे हैं. Shanghai faction, which he thought he has broken, still exists. But Hanzheng and एक और 2 बंदे बचे हैं. The biggest, I would feel the strongest today is the military industrial faction, which is led by Li Shangfu, his defense minister, who has no clue about anything. उसको बनाया हुआ है and 4 बंदों के साथ है, 5 बंदे हैं वहां पे उसके साथ उस फैक्शन में. Then जहां पड़ा था चिंगुआ में, the Tsinghua faction is changing and 1 more, 2. Now there is a faction of others who have other ties with Xi from various places. They have grouped themselves together who are not part of all these. Liu Jingguo and 7 more. That is 8. This is one of the biggest. And last, who have not played their cards as yet. 3 bande hain who have been smart. Wang Huning, who has survived Taoxiao, Chiang Zemin, Hu Jintao, and now who's with Xi Jinping. जो उसका प्रोपेगेंडा सब लिखता है, वेरियस द the 3 this thing and the 4 that thing and the 5 this thing, सारा ये लिखता है वांग हुनिंग. Wang Yi has also not thrown his cards, and the third person is Li Hongzhong. Now, if these have come out in the open, this means that these people feel that at some point in time his wings are going to be clipped, and they are now appearing to be jostling for power, which is indicative that at this point, it is not necessary that it may continue to be. At this point, they feel that the emperor is not strong enough to control all of them. तभी होता है. फैक्शनबाजी तो होता है, लेकिन खुल के नहीं होता है, बिकॉज उनको पता है कि फैक्शनबाजी का पता लगेगा तो एम्परर बोलेगा आउट विद हिज हेड. बट अगर एम्परर नहीं बोल पा रहा है, थोड़ा दबाव में है, बिकॉज एवरीवेयर एल्स यू आर फाइंडिंग अ डिजास्टर विद नो सॉल्यूशन, तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू जॉसल फॉर हिज ओन पार्ट. हर एक बहती गंगा में हाथ धो के निकलना चाहेगा यार. एवरीवन विल लाइक टू सी कि अभी या तो दे फील कि इसके विंग्स क्लिप होने वाले हैं, देन आई शुड बिकम द मेन वॉइस हियर, एंड तो इसके बाद अगले में मैं आ जाऊंगा, or that he will be removed and something will happen, he will be removed and I will come up. No wonder he spoke so and keeps speaking so much of green rhino and black swan. Black swan events, correct. Black swan event बाहर का कहीं नहीं. I feel black swan internal होगा, इसको निकाल के कोई और आ जाएगा. It's a black swan event as far as CPC and ये honestly बोलूं सर, ये जो आपने एक चीज बोली, ये थोड़ा सा फंस गई है जाके दिमाग के अंदर कि फैक्शनिज्म तभी होगा कि जब जो टॉप लीडरशिप है वो वीक रहेगी. और ये फैक्शनिज्म हमने बिल्ड होते हुए देखा था जब हु जिनताओ था. Yes. And Hu Jintao was considered to be a very weak sort of a leader. हाँ. Yes. तो ये like who can forget जब 2008 earthquake हुआ था, वेन शियापाओ और हु जिनटाओ की बात नहीं सुन रहे थे पीएलए, कब जाना है, कैसे जाना है फॉर दी हेल्प, एंड हु जिनटाओ तो चुप हो गया था. वेन शियापाओ के तो वीडियोस निकले थे वेयर ही वाज शाउटिंग रेक, शाउटिंग एट द पीएलए इन द सीएमसी. तो वो तो पता है. तो यही मेरे को दिख रहा है. ये आपने जो बड़ी चीज बोली है, अगर आप हु जिनताओ के साथ जैसे मैंने जो कनेक्ट करा अभी, मेरे को एक पर्सनली जो अंडरस्टैंडिंग बैठी है कि ये ना निकालें इसको. 1 साल तो हो गया ऑलरेडी. ना भी निकाले, बट अब एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इसके बाद अभी क्या होगा 4 साल के बाद.
क्योंकि आपने और हमने एक बात करी थी सर, इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ये इसका री अनॉइंटमेंट हो रहा था, यस यस यस, आपने 3 लेट, सिनेरियोज दिए थे सर। 3 सिनारियो दिए। उसमें से एक सिनेरियो था कि ये आएगा फुल स्ट्रेंथ के साथ, दूसरा सिनेरियो आपने बोला था ये नहीं आएगा, तीसरा सिनेरियो आपने बोला था कि यार ये आएगा लेकिन इसके विंग्स विल बी क्लिप्ड। उस टाइम ये पे तो लग रहा हुआ है नहीं। अभी, नहीं ये लग रहा है अभी, ये लग रहा है अभी कि ये हो रहा है, अभी इसके विंग्स क्लिप हो रहे हैं धीरे धीरे हम्म। धीरे, बिकॉज काफी डिजास्टर है। और हुआ क्या क्या है यार, प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो पढ़े लिखे बंदे थे सबको पर्च कर दिया, बिकॉज ही फेल्ट थ्रेटेंड फ्रॉम। नाउ व्हाट आर द ग्रीन राइनो इवेंट्स, कोई बाहर के नहीं है यार। एक तो है जो इसका इनका शुरू से चल रहा है, थैंक्स टू टंग शॉपिंग, सिंगल चाइल्ड, इट इज इम्पैक्टिंग एवरीवेयर यार। इवन पीएलए छोड़ो, एवरी वॉक ऑफ लाइफ इज इम्पैक्टेड। Now what is happening is cost of living is going high so much that the birth rates are falling. It is not matching their death rate. Working hands नहीं होंगे, your people are getting older है. Yeah. So now this is a event where you can have no control. Second, आपने इतना environment अपने देश के अंदर damage किया है. Now the chickens are coming home to roost. You are seeing the effects of climate change. Every year you have floods, you have drought, floods, drought. ठीक है, दोपसूरी के कारण कुछ हुआ, बट दैट डजंट मीन इतना बारिश होगा यार कि फ्लड्स हो जाएंगे पूरे नॉर्थ में। और पिछले साल तो इतना बड़ा ड्राउट हुआ था नॉर्थ में, साउथ में फ्लड्स हुआ था, अब नॉर्थ में पूरा फ्लड हो गया। सो जॉब्स तो है नहीं, बट द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग प्लेस इज द लिस्टलेसनेस ऑफ द यूथ, couldn't care less. He is not ready to face the challenge. अकेला पड़ रहा है। Like, I think one day we were talking कि भाई अकेला है, बैचलर है, तो उसके माँ बाप हैं और 2 सेट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट है, 4 2 6, एक बंदा 6 का लोड ले रहा है। आप जब पीछे पड़े हो कल्चरली की शादी करो, शादी कर लिया तो लड़की आती है 6 के और के साथ, मतलब एक दोनों काम कर रहे हैं और 12 का लोड ले रहे हैं, तो इसलिए बच्चे नहीं पैदा कर रहे यार। खर्चा तो है ही है, इट इज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, बट हाउ डू यू टेक द लोड, ये बड़ा सो द क्वेश्चन टू आस्क इज वेयर डज द ग्लोबल डीप स्टेट नाउ फिगर इन दिस। सर एक चीज बोलूं, ये हाँ, इसमें घुसने से पहले एक चीज बोलूं, हमने एक कुछ गड़बड़ कर दी सर, ये ग्लोबल डीप स्टेट बोल के ना। अब देखो, हमारा पॉडकास्ट हुआ, इंटरनेशनली लोग बात करना शुरू हो गए हैं, और उस दिन एक भाई साहब मेरे को कहते हैं कि आपने वहां से कॉपी किया है। मैं बोला भाई साहब प्लीज जाके आप चेक करिए, हमने ये पहले ही बात किसने कर कब चुके हैं बोला? इसके बारे में। ठीक है, वो जो रोगन एंड पीबीडी का एक पॉडकास्ट हुआ इसके बारे में, जो जॉर्ज सोरोस, ब्लैक रॉक है वो। ये अब तो सर ऐसा कॉमन नॉलेज हो गया है कि हर कोई इस चीज को अभी फैक्टर इन करता है। Yeah, but my saying is that it is the CPC which is getting scared that the deep state may drop them like a hot potato, and so they want to clip his wings. कि भाई कुछ तो बचा ले, माई बाप वापस आ जाओ, ऐसे मत करो। कुछ तो बचा के रखें और इसके विंग्स क्लिप करके रख दे। जी जी जी। Right. So now there are lessons. What lessons should Bharat take from this? Next. Yeah. सबसे पहले लाइक आई ऑलवेज से कि भाई अपना खुद का लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, और उस विजन को अक्वायर करने के लिए क्या प्लान है और कंटिजेंसी प्लान्स क्या होने चाहिए, कि भाई कुछ चेंज आ गया। दैट इज वेयर आई फील दिस इज द लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम वॉचिंग द चाइनीज। टंग शॉपिंग ने एक ही प्लान बनाया था, देयर वाज नो अदर कंटिजेंसी प्लान।
of how to actualize Sun Yat-sen's vision. And that is where they're paying the price today. So you got to keep doing a detailed net assessment periodically and keep seeing what changes have taken place, what modifications I need. You have to get laws, rules, and regulations in place to replace your archaic British laws, rules, and procedures. वो हो Very गया happy. ऑलरेडी, स्टार्ट हो गया पहला वो। स्टेप आ गया है, वो आपके खुद के जो क्रिमिनल लॉज हैं, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर्स, एविडेंस एक्ट, उसके लिए डाल दिया है, एंड होपफुली मे बी नेक्स्ट ईयर इट शुड कम इन. You should be well prepared to play your own game with the global deep state to strengthen your own rise. आपको ध्यान से ये गेम खेलना है. हाउ यू कैन यूज देम. पैसे की सबको जरूरत है, राइज करने के लिए पैसे की आपको जरूरत है. तो आप किस तरह से ये गेम खेलते हैं, हाउ डू प्ले द कार्ड्स. लाइक आई ऑलवेज से, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू लूज, सो यू हैव बीन डेल्ट द कार्ड्स. How you play your cards. Because at the moment, as I see it, the global deep state is swinging towards India or Hindustan, not Bharat. If you understand the meaning of what I say, you got to be careful. You want Bharat to rise, so you play their own game with them. Why don't you ensure that your own players are in there with them? आपके बंदों के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है, बिग प्लेयर्स आपके भी हैं, तो तभी जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं. यस, यू मस्ट. वो भी सिर्फ यू आर गिविंग देम एन ऑप्शन, यू गिव देम एन ऑप्शन दे कांट रिफ्यूज. वो भी सिर्फ फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस के साथ जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं. आपके उनके इसमें भी फैमिली ड्रिवन वेंचर्स हैं. जो पैसे आते हैं फैमिली ड्रिवन में ही आते हैं. देयर आर फैमिलीज व्हिच आर बिहाइंड, who give money into these ventures. नहीं वो पता है सर, जो हमारा जो एक फैमिली ड्रिवन कॉर्पोरेट होता है सर, उसका कल्चर डिफरेंट होता है, ये सबको पता है यार. बट कल्चर डिफरेंट है, बट यू गॉट टू प्ले दिस गेम एज अ स्टेट. यू गॉट टू प्ले दिस गेम. एब्सोल्युटली. सो दैट इज वेयर आई से द नेक्स्ट 2 decades. नहीं तो ये याद रख लेना, व्हाइल योर राइज ऑफ इंडिया करके बात करते हैं, will it be allowed to stay or will it decline? Because global deep state पैसा अपना बना लेगा तो कहीं और ध्यान चला जाएगा, कोई और राइज कर रहा है. Because don't be very wary that in the next, by the end of this century, you will find Africa also rising, right? So you got to play your cards well, that you continue, that you can also benefit from the rise of Africa. So you got to play that game, and that is the only way you got to not only ensure the rise of Bharat, but you stay amongst the top of for at least a century. Pardon the spelling mistakes, if not more. आपको राइज करने में कम से कम 20 साल लगेंगे. So target 100th year of independence, that you should have come up as something, and then make sure that you stay something for at least a century, if not more. If you play your cards well, you will stay more. If some of these families whom we talk of the global deep state have been playing this game for centuries, yeah, I as a nation should also be able to play this game for centuries. Why not? Why should I be dictated by families? That is true. So, right? And so my last slide is, arise Bharatiya, grasp your destiny. This is the opportunity to revive Bharat of you. ये opportunity आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये opportunity मिला है. So देख लो. तो ये 20 साल के अंदर हम रहें ना रहें, आप लोग तो रहोगे. It's a message for the youth. Rise to the challenge. This is the game. This is the challenge. Face it, play it, win it. ये था. We have to learn from whatever Xi Jinping has created, faux pas and all the errors that he has created. You have to learn from them.
You have to learn from how Tang Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao played the game to make them rise, and you got to be careful as to how you don't need to make the same mistakes and go down the same path. That is true, sir. Thought provoking, sir. Trust me. दो तीन जगह पे चाइना की जो, मेरे को एक ही सवाल है सर, उसके बाद हाँ, ऑडियंस के क्वेश्चंस में चलते हैं। एंड कोई इनका एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल होगा ना सर, कि यार जो परपेचुएटी कंटिन्यू करता रहेगा, कि यार अगर कोई बेवकूफ आया तो एटलीस्ट उसको हटाने का कुछ प्लान हो। वो बिकॉज देखिए, सी सीसीपी को भी जिंदा रहना है ना सर। प्रॉब्लम शी जिनपिंग का क्रिएटेड. That is why they were going carefully, gradually. Whenever the rise was threatened during Hu Jintao's time, when they felt China बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, he spoke about a peaceful rise. When उसके बाद भी जब थोड़ा इनको डर लगने लगा 2006-7, he talked of harmonious rise and harmonious society to cover up all this. कि भाई मैं सबके साथ हूं, हार्मोनियस वर्ल्ड, पीसफुल राइज. That was a duplicitous sort of a statement for the slow and steady movement forward. इसने तो आगे पूरा कचरा कर दिया. See, there, when your whole dependency has always been on exports, that means you're totally dependent on for your rise on the US and the West. जहां तुम्हारा मार्केट है, जिसके कारण तुम जिंदा हो, उन्हीं को तुम एंटेगनाइज करके यू एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू सर्वाइव. यानी वही होगी बात ना, कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर दिया. या बोलो कि टू कॉइन अनदर फ्रेज, जल में रह के मगरमच्छ से बैठ. कैसे? चलिए सर, कैसे सवाल में घुसते मगरमच्छ हैं। तो खा जाएगा तुमको, खा रहा खा है रहेगा तुमको, सर, अंदर से खा रहा है। तो खा मगरमच्छ का रहा है नॉर्मली तुमको, अटैक बड़ा तुमको समझ जबरदस्त नहीं होता आ है, रहा है. अंदर से खा रहा है तो। Like if you read this thing, when he is talking of making statements of people should buy Chinese goods only and not buy the foreign goods, उनके इंटरनेट वेबो में बंदे बोल रहे हैं, उसको कैसे बोल रहे हैं कि फॉरेन गुड छोड़, चाइनीज गुड छोड़, कुछ भी खरीदने के लिए मेरे जेब में पैसे नहीं है. अपने बंदों को बताऊं कैसे कि साले पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे तो दे. दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज कमिंग आउट इन वेबो. What buy? I don't have money to buy anything. So how can you be so blind? These are the kind, and this is telling that there is no, you can keep talking about dual circulation and internal consumption, whatever you may talk, it fails if you have not worked towards that. You didn't work. And ये पहले ही है जो बोल रहा था इंटरनल कंजम्पशन. 2002-2003 इनका इकोनॉमिक पॉलिसी देख लो, वेंचियापाओ और हू जिनटाओ का. इंटरनल सर्कुलेशन, इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाना है. hasn't happened. सर क्वेश्चंस कमेंट्स ले लेते हैं। या देखिए, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज, हमारे पास कितने, बहुत 750 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक शाइक्स कितने करें आप लोगों ने, इतना जबरदस्त प्रोग्राम सर ने दिया है। ओह, 300 तो हो ही गए हैं। चलिए, खत्म होने से पहले 400 का एक छोटा सा टारगेट रख लेते हैं। लेट्स टच 400 लाइक्स। आप लोगों, यू गाइस हैव बीन वेरी जेनरस इन द लाइक्स एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि आप और थोड़ी जेनरसिटी दिखाएं वो लाइक्स दबाने के लिए, क्योंकि उससे रीच बढ़ती है एंड यूट्यूब बहुत ज्यादा लोगों को फिर रेकमेंड करता है, और बहुत लोग फिर इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, जहां पर हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस करते हैं। देखिए, हम लोग डिबेट्स नहीं कर रहे, हम लोग नैरेटिव्स नहीं कर रहे, हम लोग इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं रियलिटी के ऊपर। ठीक है, एंड दैट इज समथिंग हमको थोड़ा समझना चाहिए, बिकॉज हिंदुस्तान और भारत और इंडिया के बीच में जो डिफरेंस अभी जो निकलेगा, दैट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ टुमारोज
क्या वो आपको और हमको डिसाइड करना है, ठीक है। इट कैन बी इंडिया, इट कैन बी हिंदुस्तान और इट कैन बी भारत। सर सबसे पहला सवाल है प्रीतिश गांधी जी का। ये कहते हैं ही इज बिकम अ मेंबर ऑफ द चैनल, सो थैंक यू सो मच। आपने मेंबरशिप ज्वाइन करी। मिस्टर राम सिंह, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ही सेज कीप अप द गुड वर्क आदि, बिग फैन ऑफ जनरल सर, बिल्ड आवर नैरेटिव, जय हिंद। जय भारत राम सिंह जी। आई मीन बाहर इधर इतने अलग अलग जगहों से लोग ज्वाइन करते हैं। अखिल प्रसन्नन, थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ डेफ टॉक्स। पवन श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर स्टिकर। एंड Mr. Vignesh Prabhu, thank you so much for your contribution. He says Z is Stalin's paranoid. Z is equal to Stalin's paranoia, or same Reg per disaster of World War II in the early stage. Ali, please change the black and white background to color. It distracts. I will do that, sir. It Red Purge, I agree with you. It was a disaster, and they won because of Hitler became so paranoid, and he started interfering with their directly with the plans of the generals. A person who was just a lance corporal in the First World War tried to dictate blitzkrieg plans to his famous generals, and that's where they lost the war. The turning point of the war were two places: Leningrad and Stalingrad. These two, because of their name, he went for the siege to those two places and lost a lot of men there, which he could never recover. Now he has destroyed the economy. Hitler destroyed his army. These people, Xi Jinping has destroyed his economy. The players are elsewhere. जो पैसे लेके आए थे अब वो पैसे लेके जा रहे हैं. कैसे रोके? बड़ा सिंपल है सर। गिरीश साहब ने बोला है ग्लोबल ऑफ सॉरी ये कंटिन्यूएशन है सर, तो दोनों मेरे को लेने पड़ेंगे ताकि ये कनेक्ट हो जाए। Global Office 2.0 says if BlackRock Vanguard governors are heavily invested in China, then we know CCP members are corrupt. Then why can't they remove Xi Jinping? Why invest in India where it is difficult to control the government? तो ये पहला इन्होंने सवाल डाला सर, उसका जवाब गिरीश साहब ने दिया है। The issue is demographics, declining birth rates worldwide except Africa. Deep state realizes that population is key to maintaining their wealth. इन दोनों के ऊपर सर आप प्लीज थोड़ा कमेंट करेंगे। Now demographics, very true. So when you look at India's demographic, for the next 20 years, you will have a very young demographic profile ranging between 27 to 30. That would be your median age. वो ऐसी पागल नहीं है जो आपके पास इन्वेस्ट करने आ रहे. And you are a huge market. जी. You are a growing population and you are a huge market. So that's the second one where they feel they can make the money. They are least interested in controlling governments or anything. Control is for government economic policy where they can make money. वो उसी के लिए आए हैं और किसी के लिए नहीं है. If somebody else comes and says that you bring me in and I will give you these policies, they will come. So at the moment they are happy, very happy with the manner in which the central government has managed to get a hold and control on all these economic policies. And private players को काफी छूट दिया हुआ है, which पहले नहीं दिया जाता. Reverse has happened in China. His demography is declining, his birth rate is declining, and the kind of control that he has taken on by bringing in, destroying the private players and bringing in the party control. See the subtle difference. Here it's not a party control, it's a governmental structure. And you have given a lot of leeway, a policy framework which gives you a lot of leeway for the private players to develop themselves within that framework. वहां पे कोई framework नहीं है, वो बोल रहा मैं हुक्म दूंगा आप करोगे. That is number one. Yes, CCP is corrupt. It has always been corrupt.
any socialistic structure is a corrupt structure. That doesn't mean that the capitalists are not corrupt. They are also corrupt, but the corruption there is different. Everybody top to bottom is corrupt. Here only the elite is corrupt. Classic case is Pakistan. They replicate China. The elite is corrupt. They will make their money. बाकी आम जनता को पैसे मिले ना मिले, they could be least interested. You can check on the net, you will find the billions and billions of dollars that is invested by Xi Jinping, which is there in US. Every top hierarchy is corrupt. So as far as the deep state is concerned, he is not interested in corruption. यार तेरे को पैसा बनाना है तू बना. As long as where he has invested, there he makes his profit. He is least interested whether you make the money or not. उसको उससे कोई मतलब नहीं. Have a look at what Aadi and I have spoken also. We have given the triangle where the council lies and where the people are and who are the people in between. It is the people down below who get some, you could say, breadcrumbs. The people above are the ones who get something from that corrupt society, and the people at the top skim off the cream. And that top is the deep global state, right at the top. Uske niche are the elite who control. That is how they function, to make sure that they keep making money. Correct, sir. I hope I've answered your question. Yes, sir. Harshdeep Sharma ji कहते हैं कि जय हिंद, General sir and Aadi. Is there a possibility of Chinese citizens revolting against the CCP? Kung Fu is only limited, or is the Kung Fu only limited to movies? Harshdeep Sharma, you don't take Kung Fu when the other side has got automatic weapons. Thank you. Okay. So that is the only way. A revolt can only happen. Even in my earlier talks on this platform, I have said, when the PLA stroke PAP breaks, that's when the revolution will take place of the people. You need weapons to fight. How do you fight? If the PLA stays with the CCP, because the PLA is not the army of the state. PLA is the army stroke militia of the Communist Party of China. Usko tootna hai na. Somebody from there has to break. The PAP is also the militia armed police of the Communist Party of China, not the state. So once they break, then it will happen. A connected question, sir. A connected question, sir. Essence आप कहते हैं कि is there a provincial or regional level domination fault lines among CCP or in Chinese society? I gave you the two major factions ना, जो पहले दो पढ़े थे तुमको, Zhejiang and Fujian. This is where he worked. तो वो दो faction बनते हैं कि भाई they have a closer ear to them. उसके बाद आता है Shanxi, where he started his journey from. Then comes the university where he studied, Tsinghua. उसके बाद बाकी निकलते. But top two are those two, the Zhejiang faction and the Fujian faction. तो always वो तो factions तो होते ही हैं. गिरीश साहब पूछते हैं, जनरल Western deep state was pro Deng and did not game the probability of second and third order effects of repeated purges would throw up an extremophile like Z. गिरीश जी, I've always said they're least interested है. आप किस थे, जो गेम खेलना है आप अपने देश में खेलते रहो, मुझे मेरे पैसे आने चाहिए. तभी जो लोग बोलते हैं ना कि मोदी को हटाओ, मोदी से किसी को कोई वो नहीं है. मोदी इज नॉट मोदी, इट्स इंडिया, इज भारत. भारत का पूरा जो सेटअप, मोदी साहब अपने आप थोड़ी कुछ कर सकते हैं. वो पूरा उनके तो पीछे देश खड़ा होता है. इनका ये है कि भाई जब तक शी जिनपिंग को फर्स्ट टर्म में भी सर पे चढ़ा रखा था, मिड सेकंड टर्म तक भी सर पे चढ़ा रखा था. द मोमेंट ही स्टार्टेड गेटिंग द स्ट्रैंगल होल्ड on to the private players and started pushing back against the private players and said ki no, ye nahi karna, wo nahi karna. Look at the first person who moved out from there. Apple came to India. We asked him initially to come. 2015 he refused, but then when the pressure came, the first thing to move out was Apple. और एक एक करके सब निकल आएंगे यार. Because when he starts controlling the private players, वहीं से तो पैसे बना रहे थे ये global deep state. तो उनको इससे मतलब ही नहीं है यार.
They sided with Deng Xiaoping because he said बनाओ पैसे. ये क्लियर होना चाहिए. The deep state is not there to control the governance or anything. They are least interested. They are there to make their money. So, Come hell, high or water, whatever. They are not interested. आम आदमी मरता है मरे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, पैसे से Ukraine मतलब. is a prime example. Sir, Vignesh Saab, thank you so much for your contribution. He says in World War II, Kuomintang and Sun Yat-sen were fighting and Mao was romancing in the countryside with his comrades. Later, Stalin made Mao to rise. Your comment, sir? Well, I would slightly differ. Uh, the Communist Party, actually the Soviets in the 20s spoke to Sun Yat-sen, and the Kuomintang and the CPC were fighting the Japanese together. But what happened was that Sun Yat-sen died and Chiang Kai-shek came in. He never liked it, but he was, the Generalissimo, as he was called, was spoken to. But he noticed that the Communist Party was subverting his own people. That's when in 1934 he attacked Shanghai. And that led to, and defeated them completely, and that led to the Long March. Uske pehle he had attacked all the warlords all over, and he had brought a sort of a unity within China. The Kuomintang, not the Communist Party, the Kuomintang under Chiang Kai-shek. And so they went towards Shanxi, and they went to Shanxi. Why? Because that is northwest. It was closer to the Soviet Union. The Soviet Union could support them. So the frontal fighting of the Japanese was left to the National Revolutionary Army of the Kuomintang. They said, we will do the guerrilla war, and that they used to subvert the rural masses. And rest, they say, is history. And yes, Mao helped. Mao was totally helped by Stalin, and he was totally besotted with Stalin, and he hated Khrushchev. Hated Khrushchev like poison. The moment Khrushchev came to power, the relations fell down the drain. 1950s, 1960s में 1956-57 में उसने जो secret lecture दिया था, which was leaked purposefully to the world. They didn't like Khrushchev at all. He didn't like Khrushchev at all. दूसरा है सर, एक चीज लोगों को ये समझना चाहिए, sun Yat-sen के बारे में बात करते हैं. Sun Yat, I think, okay, can you hear me, sir? Yeah. तो Sun Yat-sen ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि भाई we need to use the Western capitalism to further socialism. तो बहुत लोग बोलते हैं भाई Sun Yat-sen बड़ा अच्छा आदमी था, ये था वो था, उसका भी मोटिव, अब वो कम्युनिज्म नहीं बोलता था, वो सोशलिज्म बोलता था. तो वो सीसीपी बनाता कि पता नहीं Sun Yat पार्टी बनाता, मेरे को पता नहीं है, बट आई थिंक द थॉट प्रोसेस वर pretty much the same. JP, thank you so much. He didn't use the word socialism as much as he used the centrally controlled economy. उसमें सर वो 1922 में उसमें बोला हुआ है, उसने एक जगह उसने लिखा था कि extension of human socialism. More and more he used to basically talk about a controlled economy. Correct, sir. हाँ, वो central control तो पूरा था उसका. That setup was standard. Thank you so much for your contribution. General sir, last Saturday you talked about Tamil and Sanskrit. When are you going to do a full show on this? तो ये तो यार ऐसा है, this is something which is going to be under work, and इसके ऊपर काम I've started work on that, and I'm really sorry, next Saturday I won't be able to, because I'm speaking in a national seminar on China, Xi's third term and its effects on the India. Nation wants to know what General Ryan wants to say now. नहीं तो वो लेट हो जाएगा by the time it finishes, and after that I have to go out for some work, IIT Madras ka work. I am a professor of practice there. I will be available on 26th, and I'll see if I can work it out, and the Saturday after that, because the initial work I have already made my slides and started working on how I'm working out the flow of that, which makes it easy for Janta, everybody to understand. So, RK साहब कहते हैं, very interesting question. I must say, is there any hope for things taking a turn for Tibet getting liberated?
long term. It's still quite a long term. You never know if CPC if you have another black swan event where CPC itself gets overthrown by the people and some elements from the PLA and PAP. You never know. Both Xinjiang and Xinjiang may become Eastern Turkestan and Tibet may become free, and Dalai Lama and the government in exile in Dharamshala may get back to Tibet. You never know. These are black swan events, so you can't predict. Correct. Couple of quick ones, sir. Priyanka says, even though we have lithium reserves, but disposal is very dangerous, so shouldn't we focus on green hydrogen for EV cars? Priyanka ji, problem about the green hydrogen also is it's very explosive how it is carried. बड़ा हाई प्रेशर में अवेलेबल होता है, तो टक्कर लगेगी. जैसे ईवी कार्स का भी आजकल वीडियो काफी निकलता है, 2 कार में टक्कर होगी, आग लग गया. हाइड्रोजन वाले में भी यही प्रॉब्लम है. See, all said and done, ultimately, ICE cars are not that, ऐसा नहीं कि आग नहीं लगता, और are not that prone to catching fire as your EV or hydrogen cars. And EV cars, I have my own this thing on that it's not as green as it is touted to be. Hydrogen, yes, but getting the hydrogen and in the form where you can use it, it has to be stored in a very high pressure. Once you are able to resolve those issues, then yes, that is the only, it's purely green. I agree, but costly hai. Aasan nahi. John Doe says, is there a history of assassination attempts against the CCP leaders? Well, there was one person I had met about 3 years, 5 years ago. He had come from Hong Kong. And in his first 2 terms, 2019, I had met him 4 years ago. He had said till then, there had been, he claims, 19 attempts on Xi Jinping. And whenever Xi Jinping is not visible in the media for at least 2 weeks, he claims that you should be clear that there has been an assassination attempt on him, and so they are sorting out the security around him. He wants to always be in the news. Shriti I Kothari don't know the says, veracity of that, but he was very clear, and we were sitting on a round table discussion, Chatham House discussion, and there were people from EU and other places also where this chap had come, and we were discussing China, and this is what he had to say. why is she threatening everyone in the South China Sea region is backfiring badly? Philippines, Vietnam are now allying with the US, India to tackle him. How many more enemies does he think he can handle? शिरीष कोठारी जी, अब पछता है होत क्या शीजिंग को जब चिड़िया चुग गई थे. मेरे को पता था He thought he was powerful and he could handle everybody. अब फंस गया. He's caught in his own trap, and that's why, like I said, in the first opening remarks, Absolutely. he's a cornered rat. So he doesn't know anything else. A cornered rat strikes. He knows. And then I linked it to the factionalism, rise of the factionalism. And when does factionalism come up? And I call him the lonely leader. And you see it in the political parties also. In India also. Factionalism within party and everything, and openly fighting against each other. All these comes when they feel that the central authority is very weak and can't do anything. When the central authority is strong, it is not that the factions are not there, but they keep quiet. So they're scared of that central authority. Now that this factionalism in CPC is coming up, and it is very visible, then you know that they feel that he's sinking. And so if he's a cornered rat will do anything. Yeah. He'll strike anyway. Batraji says, will there be an open revolt or will there be slow clipping of power? No, Batraji, I think वो पहला indicator आ गया था जब State Council reversed his एक policy decision. And the second also, they have said that if any of these party people try to threaten private Valco, because since he was bringing in a lot of party control, if they try to threaten, tell us, we'll take action. So on that, and they are wanting to give
a level playing field to the private players and to the SOEs. And so there has been a number of almost 100 plus raids on the SOEs against corruption, to tell the private players that it is not only you will target the. So that first level has gone up, and he is absolutely quiet. Global Times is also actually quiet on this, which tells you that he's on the back foot. So I think they will do a slow clipping of his powers, but will it be too little too late? That the people have, and the PLA has to decide. Profound statement, sir. I think that's a bottom line of our show today. Maitri Upadhyay says, Asa, if they are so disturbed, what would explain their disputes all across the borders of China? Is it Xi's arrogance, and isn't he one of the Hitlers assassinated by his own people? I'm not sure I Upadhyay understand ji, the second part, but देखिए, when he created all these problems, he felt he was very strong. Like he thought India, जैसे गलवान का हुआ, to give an example, he thought India is down and out because of the COVID, and he never expected that the army not only will stand up and bash them up nicely. अब वो हो गया. No, he miscalculated. Now it's loss of face for him. For him and the Chinese, loss of face is tremendous, and so he cannot do anything which shows loss of face. एक partial loss of face हो चुका है Pangong Tso में, where they have been forced to destroy all their defenses on all the other fingers, 4, 3, 2, 1, and they have been asked whatever they had made. आगे everything has been destroyed, and they have gone back 9 kilometers. Now, can he afford to do it? The Communist Party of China has to decide कि भी loss of face Xi Jinping का होगा, we can force him, they'll do that. अब now he has become disturbed. Now he has become disturbed. He follows his mentor Mao. Whenever Mao was cornered, he hit out. Please remember, Deng Xiaoping also hit out in Vietnam because he was feeling cornered within the Communist Party of China. Okay. And he felt the PLA was not listening to him. So they went in. He was happy that operationally and tactically it was a total disaster as far as the PLA was concerned. So he could mold them whichever way they want. He purged all those people out, threw them out. Nobody asked questions because everybody knew it was a total disaster. Geostrategically, it was a big victory for him because Vietnam and Soviet Union had done a deal like what we had done in 71 war. But Soviet Union didn't help Vietnam because they were already getting embroiled in Afghanistan. So the region was told that I am the boss. And the party was told I am the boss. And he became the boss. So Hitler was not assassinated. There were other Hitlers, yes, who were assassinated. But Hitler was not assassinated by his own people. He shot himself. But yes, his mentor, he looks at Mao and Mao looks at Stalin. Some people say Stalin himself was poisoned. They didn't open the door. मर रहा था वो. उसके पहले उसका जो खासम खास बरिया था उसको उड़ा दिया था. How it happens. Lavrante Beria. You live by the sword, you die by the sword. So you never know. You never know. So, sir, next one is a very interesting question with no disregard to the person that has written it. But who feels he is weak, why doesn't India capture few kilometers and then China would be forced to negotiate and withdraw from LOC? Since this is not happening, I don't feel he is weak. It is like saying that since the banana that I'm eating or the cheese I'm eating is raw, it is not as like a normal cheese, so it is chopped. I would like to say it doesn't work that way. Why should I attack? I have pinned him down. Now look at his problem. He had 4 divisions deployed in Xinjiang. That was not why it was meant for India. Its essential task was keeping the people in check. उसमें से 2 डिवीजन यहाँ आ गए हैं लद्दाख के पास, and he doesn't know what to do. So that is where his big concern today. Why do you think so much of talk is going on? कभी पाकिस्तान से बात करता है, अफगानिस्तान से इतना बात कर रहा है. वो is most concerned about the Uyghur Brigade, which fought in Iraq and Syria, coming back into Xinjiang.
And then what is he going to do? He has only 2 divisions out. ठीक है, लड़ने की क्या जरूरत है? Why I find a lot of people in India thinking कि अगर वो नहीं करता तो मैं लड़ लूंगा. Fighting is not the solution. Fighting is the last solution. Yes, it's the last resort. अगर उसको LOC से पुल बैक कराना है, मैं लड़ूं पुल बैक कराने के लिए, then I'm doing the same thing what he is trying to do. Exactly. लड़ना है तो कुछ जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिकली हासिल करने के लिए लड़िए, ऐसे में 4 किलोमीटर के लिए लड़ाई कर लो. हाँ, that is no. Ajay Randhawa says, what a pleasure to listen to General Rajiv. As a soldier, we always looked up to such officers. Thank you, Randhawa ji. Thank you. JP, thanks so much for your contribution. Arvind, you didn't read the second part of my question. Please do. What was the second part of your question? Let's see. बहुत पीछे है कहीं पे. I'll have to find it. I think he was asking which is the older language, Sanskrit and this thing. Yeah, Bro, that we'll is come something to that. that we'll come to that. So usko chhod de yaar. I mean, See, I don't when want we to. come to that, you will understand why I am not telling which is an older language. Yeah, and the debate will go on a different direction. So let's be very clear. Sahi says when a dictator is about to fall, he does something disastrous to divert attention. I believe he will attack Taiwan, but will start from India. Do you agree? Saiji, one point which I didn't mention here, his closest friend, who he considers blood brother, whose father was also purged and who have been friends since then, who despite his retirement age has given him an extension and who is the vice chairman, Zhang, in the CMC, has also told him that PLA is not ready for the fight on Taiwan. So the two places which three places. One is India, he might try. Because kahin na kahin haath marna hai, and it's not going to be a big one, something small which can attract attention. The other place is something in the South China Sea, because all these countries are very weak. Since before the bases come, will he take over the complete Scarborough Shoal from the Philippines? Do something there? Because once the American bases are complete in Philippines ko haath nahi laga sakta. He is over. You can't talk. It's over. And the third, which I have always said earlier in my talks, the 3 islands which belong to Taiwan, which are west of the Matsui, Kinming, and median Manmo. line and very close to Kinmen, Matsu, that line, those islands which are very close to the Chinese mainland. During this time when Tsai Ing-wen had gone to USA, they had cut the internet cable of Matsu in the north. Yeah. Please remember that. So any of these he can do. So that is why in my opening remark I had said you got to be careful. India cannot lower its guard. Just forget it. The army cannot lower its guard, and whatever the capability development and modernization push that is going on by the government has to continue. It can't falter. Sorry, just can't afford to do. But those two are the other places. True, so anyway, you are right. Marta kya na karta, kuch na kuch to karega wo yaar, just to show that I was right. Pawan Srivastava says, big fan of General Narayan as well as your show, Aadi. Question, what does practice denote in IIT curricula? Also, is sir from Armored Corps? Pawanji, yes, I am from the Armored Corps. And professor of practice means that I don't need to be a PhD. I give the user input for the military technology and I mentor the scientists, because the scientists have the knowledge, but they don't get the user perspective on how that technology can be used for the military. Correct. So I, along with, there is another General Shankar there. So the two of us give them that, you could say, the input for military technology. And 2 small comments to close the show. Bharat Telugu says, Major Saab, Major General Saab, please. Aadi ji, mind-blowing streams. Superb, Jai Hind.
And JP said, General sir, how do you remember so many boring Chinese names? यार 24 साल हो गए चीन को देखते हुए, तब तो नाम याद भी हो जाते हैं। पहले तो बड़ा मुश्किल होता अब तो याद हो जाते, आसान लगता। जब बार बार पढ़ते रहते हो, बार बार बोलते रहते हो, तो नाम आ जाता करेक्ट, करेक्ट। नहीं वो तो है सर, मैं एंड आई हैव फुल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू सर। आपने काफी मेरे को भी पर्सनली गाइड करा है, एंड काफी, अगर आप ऑडियंस पूरा ये शो फॉलो करते हैं, आपको पता चलेगा मैं पिछले 3-4 हफ्ते से चाइना के ऊपर काफी फोकस लगा रखा है मैंने। एक एक शो में हर हफ्ते में कर रहा हूँ ऑन डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप। अभी भी 3-4 एंगल्स बाकी हैं जिनके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो सर से काफी हेल्प लेता हूँ मैं, एंड इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। हम लोग काफी लंबी लंबी बातें करते हैं इन चीजों के बारे में। एंड ट्रस्ट यू मी, ये प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, ये ऐसे नहीं है कि बस ये करना है और खत्म। इसके ऊपर काफी डिस्कशंस होते हैं, काफी एक्सचेंजेस होते हैं, इसके ऊपर काफी सारी चीजें ऊपर नीचे जाती हैं, तब जाके डिसाइड होता है कि क्या करना है हमको। जैसे मैं बोल रहा था, वेडनेसडे रात को हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, चाइना के बारे में, एंड ट्यूसडे या वेडनेसडे को, एंड देन हमने डिसाइड करा कि यार इसके ऊपर आई थिंक शो करना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक ये चीजें काफी लोगों को पता ना हो। सर एज यूजुअल, थैंक यू सो मच। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सैटरडे आफ्टरनून स्पेंट। है। थैंक यू मैं आदि, ऑलवेज आई माय मीन प्लेजर। ट्रस्ट यू मी। आई एम सॉरी 19th को मैं नहीं रह पाऊंगा, हाँ, मैं लेकिन वही बोलने 26 वाला आई था, बी काफी बैक। सारे लोग थोड़ा सैड होने वाले हैं, सो प्लीज नहीं, बी 26 केयरफुल। आई आपकी बी तरफ, बैक। उसके नेक्स्ट सैटरडे 26th आई बी बैक, बिकॉज आई आपकी कांट तरफ, हेल्प इट। इट्स नॉट आपकी गोइंग तरफ। टू फिनिश टिल ऑलमोस्ट अबाउट, उसके बाद डिनर भी है, एंड नहीं नहीं, पीपल आप फ्रॉम आई ऑल कैन ओवर अंडरस्टैंड इंडिया दैट आर सर, बट मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी तरफ काफी गोलियां चल सकती हैं, तो थोड़ा बच के रहिएगा बस, बाकी सब ठीक है। कमिंग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू थैंक्स। टॉक। एंड बहुत ही मजा आया। टुडेस टॉक हैज बीन वेरी वेरी एजुकेटिंग फॉर अस गाइस। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने इतना थैंक यू प्यार देते हैं एवरीबॉडी। और इतना सपोर्ट देते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक। जय भारत। और जल्दी से जल्दी आदि का मैंने बोला, आई वांट हिम एट कम से कम 500,000 मिनिमम बाय द बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। 500,000 होना चाहिए थैंक यू फॉलोअर्स। सर, आई होप सो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।